The topic of discussion is macromolecules, and the subtopic is properties of enzymes. The next factor is pH. Enzymes work at their best at optimum pH, just like optimum temperature. For example, pH of salivary amylase is 6.4 to 6.9. So here is a curve showing the effect of pH on enzyme. जैसे जैसे हम pH increase कर रहे हैं वैसे वैसे rate of reaction भी increase कर रहा है. एक certain pH पे it reaches to the maximum, but जब हम उससे exceed करते हैं तो वो जो curve है वो decrease होना शुरू हो जाती है क्योंकि enzyme जो है वो denature होना शुरू हो जाता है. Here is a graph showing the effect of pH on two different enzymes. हर enzyme की अपनी pH होती है, वो एक pH range में maximum work कर रहा होता है. So first enzyme works at a pH of maximum 6. ठीक है, जब 6 pH होगी तो वो maximum work करेगा, and the other enzyme will work between 10 और 12 जब pH होगी, so it will work at its maximum. Here we have another practice MCQ stated as the pH of trypsin enzyme is less acidic, basic, highly acidic, none of these, and the correct option is basic. The next factor is radiations. Enzymes get inactivated by exposure to infrared, ultraviolet, X-rays, beta rays and gamma rays. जब भी हम इन रेज से एंजाइम्स को एक्सपोज करेंगे they will be inactivated. Here is another question. Radiation may affect the enzyme and takes part in activation, feedback, inactivation, and none of these. And the correct option is inactivation. So here is another concept of activators and inhibitors. Some enzymes consist of solely proteins. Most enzymes are the combination of coenzyme and apoenzyme. Apoenzyme is protein part while coenzyme is inorganic part. Activators are inorganic substances which increases the rate of enzyme activity. They will work as catalyst for catalyst. For example, magnesium is an activator for phosphatase, while inhibitors reduce the enzyme activity. For example, arsenic poisoning. So activators are those inorganic substances जो enzyme activity को increase कर देते हैं, जबकि inhibitors are those substances जो कि enzyme activity को reduce कर देते हैं. Activators में we had example of magnesium, while in inhibitors we have an example of arsenic poisoning. So in this diagram you can see जब एक inhibitor allosteric site पे आके bind करता है, it alternate the structure of active site, जिसकी वजह से substrate जो है वो active site के साथ bind नहीं कर पाता और enzyme product complex नहीं बनेगा, products नहीं बनती. जबकि activation में क्या होता है, जब कोई activator जो है वो आके bind करता है allosteric site के साथ, तो वह एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर इस तरह से आल्टर करता है कि उसके साथ सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाती है. सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स. सो इनहिबिटर जो है वो एंजाइम एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा क्योंकि वो एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को इस तरह से आल्टर करता है कि उसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाती, जबकि एक्टिवेटर जो है वो इस तरह से एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को आल्टर करता है कि सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड करती है, कॉम्प्लेक्स बनता है और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. So therefore they activate the enzyme, they work as catalyst for catalyst. In today's world, enzymes have wide applications in diagnosis, in medicine, and in treatment of various disorders. For example, alkaline phosphatase is a diagnostic tool in rickets and obstructive jaundice. If we have raised alkaline phosphatase in our blood, so diagnosis can be made of rickets and of obstructive jaundice. But if LDH1 is raised,
It's a diagnostic factor of heart diseases. यानी कि अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपकी बॉडी में रेज है, सो इट कैन आइदर बी रिकेट्स और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. लेकिन अगर LDH1 रेज है, इट मीन्स के a person is suffered from heart diseases. Next is the use of enzymes in the field of medicine. Some are used as drugs. Thrombin used to stop bleeding. Thrombin is an anticoagulant, so इसलिए हम उसे bleeding को stop करने के लिए use करते हैं. Used in the treatment for cancer, while asparaginase is useful in treatment of blood cancer in children. Here we have a practice MCQ. LDH1 is a diagnostic tool in thrombosis, AIDS, rickets, or heart diseases. And the correct option is heart diseases. Next, here are the enzymes which are used in the digestion of our daily diet. कार्ब्स पे जो है वो अमाइलेज एक्ट करता है, सुक्रेज, आइसोमाल्टेज, माल्टेज और लैक्टेज एक्ट करके उसे सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोटीन्स जो हम अपनी डाइट में इंटेक करते हैं उन पे कौन कौन से एंजाइम्स एक्ट करते हैं. दे आर पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड पेप्टाइडेसेस, और वो प्रोटीन्स को सिंपलर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. नेक्स्ट, जो हम फैट्स लेते हैं, ऑयल्स लेते हैं, उन पे एक्ट करता है लाइपेसेस, जो उनको सिंपलर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिपिड्स में कन्वर्ट करता है, दैट आर fatty acids. So this was all about enzymes. I hope you have understood the lecture very well, and thank you so much.